inspiring, we say that we are in the game of raising aspiration more than inspiration. Inspiration की कमी है नहीं हमारे देश में. Aspiration की कमी है कि to get up from your seat and do something. I was in a position where I could have turned a criminal. I could have turned anything, right? But I chose say no. कुछ करते हैं. Anybody listening to this interview, and cribbing is a loser. So start small. किस बात की शर्म? हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है पता है? खाना आपको सब दे देते हैं. लाइक आप रोड पे भीख भी मांगोगे तो आपको 2 रोटी मिल जाएगी, राइट? लेकिन वो रोटी कैसे मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आई ऑलवेज से दैट हे गाइज, फोकस ऑन अर्निंग फूड विथ डिग्निटी. इज्जत की रोटी, राइट? बट आर वी एन इन्फ्लुएंसर ऑब्सेस्ड जनरेशन? क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं. इन्फ्लुएंसर्स कौन है? आई मीन हमारे कंट्री में ना, हमारे देश में, हमारे कल्चर में इन्फ्लुएंसर्स हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं. वी हैव क्रिकेटर्स, वी हैव पीपल लाइक रतन टाटा जी, अजीम प्रेम जी, ऐसे लोग, सुधा मूर्ति, ये लोग हैं इन्फ्लुएंसर. तो इंटरनेट पे जो है ये तो कंटेंट क्रिएटर थे बेचारे, मतलब नाच रहे हैं. मी माई सेल्फ, आई कैन नॉट बी अ कंटेंट क्रिएटर. मैं आलसी हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा. सिंपल कहानी है. इट इज़ वेरी टफ. जो बोलता है ना मैं बनना चाहता हूँ, तो जाओ बनो ना. कौन रोक रहा है? एंट्री बैरियर तो है ही नहीं. आप किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग, एंड यदि आपसे वो कनेक्ट करेंगे तो आपको पैसे भी देंगे. मेरी अपनी जो स्टॉक मुझे अच्छी लगती है. I've done one. जीवेशु आलूवालिया, yes, the stand-up comedian. yes. His Joe stock is very inspiring. And I remember it clearly. Salman Khan of the stand-up comedy. Whatever you call him, he's a handsome guy. Yeah, I'm very talented. उन्होंने कहा था कि most people die at 25, they only get buried at 75. Yes. Very powerful line. I still remember. I want to scale your biceps as much as we can. I want to be a brother to Ranveer. I want to be in all thick and thin with him. मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरा ना है नहीं कुछ, ठीक है? I have got it from somewhere and I don't know where. And if it is not mine, why should I keep it? So I give. Hello, Jas Kapoor here, Just Talking at Tycon Chandigarh, and हमारे साथ हैं, I'm going to get this right, social media evangelist, brand consultant, Too much. Let the work speak. mentor to new age digital brand influencers, and Josh Talk mentor. And आपके जो रणवीर अलाहाबादिया आजकल बहुत जिनका सितारा चढ़ा हुआ है, Beer Biceps, the Ranveer show, TRS. You've been a solid mentor to him. I think he swears by you. So we have the digital content creator guru with us, the content Badshah, I'm going to call him, Manish Pandey. Welcome. So you're out with your book, Booming Digital Stars. Yeah, I mean, it was done, I think 2 years ago now. अच्छा, 2 साल हो गए. 2 साल हो गए. COVID में, like most of us, we were all of a sudden, a lot of time in hand. Lot of creativity. Yeah, a lot of creativity. तो क्या मतलब, my co-author Harsh Pamnani should get 99% of the credit for the book, and I should get 1% because he did the most hustle. He was passionate. He pushed me that, okay, I should be a co-author because I had some bit of contribution. So I always give him, 99% credit and keep 1% to myself. That's fine, because that also I recently learned कि कुछ credit रख लेना चाहिए. You were right. I have been associated with Joe Stock since 2016. I am one of the team members. And my very good friend Shobit and Supriya are co-founders at Joe Stocks. We have an amazing team of 150 people plus who do very dedicated work. And Joe Stocks today is India's largest storytelling platform. Inspiring. More than inspiring, we say that we are in the game of raising aspiration more than inspiration. Inspiration की कमी है नहीं हमारे देश में. Aspiration की कमी है कि to get up from your seat and do something. So that was why Joe Stocks was started, and Joe Stocks always keeps that vision alive. So we say that we are in the business of unlocking human potential. So that's what we have crazy leadership team. They take care. I have a very, very, very tiny contribution at Josh. Even now, I contribute very externally because the team has grown and things there. So yeah, that's that. And then I work with Ranveer. Yes, you are right. We work together on a lot of things. We are on the quest of growing the podcast. We are doing good. So you made him the star. Not really. That is incorrect. No. That is totally incorrect to say. He was supposed to be a star. He is a very, very hardworking guy. I have just been a support system, you may say.
I am his bouncing pad, Okay. like we are home to each other. That would be a right thing to say. And because of Ranveer, I got introduced to all other content creators, right? Like how we interact with Ankur today, and Ankur, is very kind enough to say that I have helped him in his journey. Many content creators take my name. Ankur Wariku. Yeah. Many content creators take my name, when it comes to their success and all. But I think it is all very undue the credit I get. I mean, they did the most hard work. I did little bit of course correction here and there, tell them what works, what doesn't work, how should they conduct about it. And that's been my role, and I'm very lucky and happy. And I mean, with a lot of gratitude, I accept whatever I get. But your role कहाँ से शुरू हुआ? Tell us about your journey, because you My also come journey- बहुत पीछे से आते हो आप. Yeah, my journey is there on internet a lot. मतलब कोई मेरा नाम डाले मनीष, और वो पहले क्रिकेटर आता है. हाँ, तो बट अब यदि मनीष पांडे और सोशल मीडिया डाल दे, मान लो, या जो स्टॉक्स डाल दे, या हाँ. मनीष पांडे कंटेंट क्रिएशन डाल दे, तो हाँ. आ जाते 8 से 10 पॉडकास्ट दैट आई हैव डन ओवर टाइम, which has all my story. So I had a very, very difficult Yes. start. However, I'm grateful that I had a difficult start. If I did not have a difficult start, Difficult in what sense? it was economically difficult. You came were from a- originally from where? I'm from my ancestral roots are from UP, from Balia district. However, I never got to live there. I was born in Calcutta. I was raised in Nepal. Then I came back to Silvassa, which is the capital of Union Territory, where my father was a security guard in a factory, and I stayed with him in a security guard cabin. Was some matchsticks. Yeah, and when life started and life happened, right, and one thing led to another. After 12th standard, I came to Pune, started working in a call center, slowly got to know things. 4-5 years के बाद, stumbled upon a digital marketing company, learned social media, all of that, and धीरे life But took off. ये आपके लिए स्टोरी अब बड़ी वो हो गई है कि been there done that. मैंने बहुत बार स्टोरी शेयर कर दी. Yeah. बट जब कोई इतना पीछे से आता है, उसमें वो कीड़ा कौन डालता है? वो who planted that thing in you कि नहीं तुम पढ़ो, तुम आगे जाओ, किसी ने तुम नहीं करो. किसी ने नहीं. I'll tell you, I have said this in many platforms. I'll say it again. I had very small goals, और मुझे लगता है मेरे सारे goals complete हो चुके हैं. I had small goals कि I wanted to give my sister a clean, hygienic toilet. I wanted to shift my parents from a slum झोपड़ा to a livable house. वो सब वो गोल्स कहाँ से आए? वो अब आप देख रहे हो अपने माँ बाप, आपके माँ बाप रह रहे हैं झोपड़े में, आप उनके साथ रह रहे हो झोपड़े में, आपकी बहन पब्लिक टॉयलेट में लाइन लगा रही है, इवन सो ऑल ऑफ दैट, राइट? So you want to change that. That's why you want people to have that aspiration, that can do spirit. Yeah, I mean, It was if देखो I मत think करो. I think if I could do, anybody can do, right? Like I was in a position where I could have turned a criminal, I could have turned anything, right? But I chose say no, कुछ करते हैं, कुछ मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बहन को पढ़ाएंगे. So all of that. So How's your sister now? she's good. She's doing clinical psychology. She's PhD in clinical psychology. So I think she's doing good. Yeah, I mean, ये boring है. I mean, to tell about No, I don't think so. It's boring, because I think that's how you're going to inspire generations. Because सबको लगता है, like Ankur Wariku just said, you sitting over here are the privileged class. Yeah. Don't say that you're not lucky people. You're very No, lucky. very lucky. You're born with a silver spoon in your mouth. Like, You already I- have parents, good house, good education. फिर किस बात का रोना? I told this in Raj's podcast also, Raj Shamani's podcast, that anybody listening to this interview, and cribbing is a loser. Reason is because you already have internet, you have phone on which you are watching it, right? How can you say that you don't have privilege? The tools, right? I mean, you have. It's just that you're lazy then, right? Like, I mean, the only thing that you can blame is yourself. Nobody is stopping you from doing whatever you want. I mean, start small. Start small. Who's क्या उसमें शर्म थोड़ी है, right? मतलब I did odd jobs. I mean, मैंने लोगों के मसाज भी किए हैं पैसे के लिए. मैंने मैकडोनल्ड में काम किया है. मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर उठाए हैं. मैंने फैक्ट्री में डेली लेबर जॉब किया है 70 रुपये पर डे पे, राइट? आई हैव डन ऑल एंड आई एम डूइंग दिस. सो स्टार्ट स्मॉल. किस बात की शर्म? पैसा कितना जरूरी था आपके लिए? पैसा बहुत ज़रूरी था. और अब ऐसा लगता है कि वो एक सर्कल देख लिया है कि कितने पैसे से क्या हो सकता है, राइट? सो अब उतना अटैचमेंट नहीं है पैसे से, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी था. मतलब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है पता है? खाना आपको सब दे देते हैं. लाइक आप रोड पे भीख भी मांगोगे तो आपको 2 रोटी मिल जाएगी, राइट? लेकिन वो रोटी कैसे मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आई ऑलवेज से दैट हे गाइज, फोकस ऑन अर्निंग फूड विथ डिग्निटी. इज्जत की रोटी,
right? So I was in the quest of getting that food with dignity for myself, my sister, my mother, my father, you know, and you know, so I was just focused on that. So, you know, there's a Japanese saying, I think, that if you give a man a fish every day, you will not teach him anything. Teach him how to fish. Yeah. And then he will know what it is to fish, cook, eat on his own. Yeah. So, are you also on that path now that you have? I- are you also in that social zone to help? I don't know if I can take and be holier than thou and say that, hey, I'm on that path and I'm inspiring so many people and this and that. But I think मेरे accent से हो जाता है. You know, they say that when you move and people, like-minded people, you know, get in touch and they move along with you. So I never leave an opportunity of interacting with anybody when I come to such events. I must have spoken to 10 to 15 startup, very young guys, 21, 22, 25-year-old. They all presented what they were doing and I could give whatever ideas I could. I connected, immediately connect with people that they should connect. You know, किसी को fundraise के लिए help चाहिए, किसी को branding के लिए help चाहिए, किसी को मीडिया आर्टिकल के लिए हेल्प चाहिए. तो मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स है मैं तुरंत उनको कॉन्टैक्ट देके तुरंत एक मैसेज डाल देता हूँ कि यार इस बंदे को मिला, अच्छा है, प्लीज़ इसको थोड़ा हेल्प कर दियो, ये वो है. सो आई डू ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक and I do when I move out. Like, I don't keep attached myself to that, right? Like, I got a message in the morning today. A young kid texted me saying she got into Harvard and I had a role to play in her getting to Harvard. And I was like, क्या बोल रही है? And then she reminded me of something that I have done couple of years ago, जिसके वजह से वो हो गया. And she wrote a piece about in her application and because of that, she got it. I mean, that's what she said. पता नहीं मुझे खुश करने के लिए हुआ क्या. People are thanking you because sometimes, you know, it's होता है कि no good deed goes unpunished. But वो कहते हैं नेकी करो खूह में डालो. But I've rarely come across people who have that kind of security in them to share their network. Yeah. मैं तो खोल देता हूँ. Like, I am a very movement guy. So, you know, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, you know, मतलब कोई ज़्यादा गोल घुमा रहा है तो मैं रोक के बोल भी देता हूँ कि यार मत बना मुझे, ठीक है, मतलब मैंने घाट का पानी पिया हुआ है तो प्लीज़ मेरे को तो मत ही बना. आई मीन, तेरे को ये चाहिए डायरेक्टली मांगना, मतलब क्यों गोल मेरी तारीफ क्यों कर रहा है फालतू में, यू नो, व्हाई यू बटरिंग मी, आई डोंट लाइक बीइंग बट. ओके. सो यू नो, मुझे नहीं अच्छा लगता सर आप ये आप वो, ठीक है, मतलब ओके, आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट इट. काम की बात कर रहे हो यार, बहुत कम समय है सबके पास, राइट? So, कम समय से हम कहते हैं जैसे कॉल सेंटर आपने किया, then you got into digital marketing and you understood the ropes and learned the game. Then Jas Talk happened and you started mentoring them, counseling them. No, I never mentored Jas Talk. I was a part of the team of doing everything, right? So I used to head research there. Okay. So, right. And I worked very closely with the YouTube team and all, and you know, most of the credit goes to Shobhit, who's our co-founder. Then we had a senior leader called Vedant. Today he's running his own startup. You know, Harsh, who's head of development, technology and development at Josh, he cracked the algorithm. Harsh is the guy who cracked the maths of how video moves and all, and we all learned from him. And that's the knowledge I took it to everybody here. Right? Coming to that is video content, like you tweeted also, you shared that tweet with us. That everything, print, television, journalism, everything is going to go. We cannot be arrogant enough to say कि सब खत्म हो जाएगा. But what is now the stage of content? क्योंकि आजकल सारे कहते हैं कि भाई तुमने अगर कंटेंट नहीं क्रिएट किया तो तुम नहीं एग्जिस्ट कर पाओगे अपने बिजनेस में या अपनी लाइन में. डिपेंड करता है कि इंस्टाग्राम पे भी हिट होना है. कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग. क्योंकि कई बार मैंने देखा है पीपल आर जस्ट रैंडमली पोस्टिंग विदाउट even an iota of thought into it. What is content? Process to madness is very, very important. Like, I will urge you also to check. Ankur Wariko, who spoke today, has put out a very beautiful video called How Do I Bring Out 60 Piece of Content in a Week? Right? This video we did when I was working with Ankur very closely. उस वीडियो को सबको देखना चाहिए. Just go search Ankur Wariko के चैनल पे 60 piece of content और वीडियो देखो. उसके साथ ना एक एक्सेल शीट अटैच्ड है विच इज अंकुर इज वेरी, ही इज ऑल्सो अ गिवर. सो उसने वो फ्री में डाल दी है सबके लिए, यू नो, फॉर देम टू शेयर. वो शीट आप डाउनलोड करो और इस शीट पे पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है. यदि आप उस शीट में स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया हुआ है वैसे काम करो ना, कोई भी कंटेंट हिट हो सकता है, राइट? कोई भी इंसान कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, राइट? बट वो प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Who is a content creator in your language today, in today's world? Everybody. I mean, somebody, anybody and everybody. Right? Are we a content creating obsessed generation now? No, not. We are too soon to say that. We are not yet there. But are we an influencer obsessed generation? क्योंकि सब influencer बन रहे हैं. No, कोई influencer बन नहीं सकता. Influencer वो होता है जिसके कहने से कुछ
थम जाए, कुछ चल जाए, राइट? इतने औकात वाले कोई बने नहीं है अभी तक, ठीक है? किसी बोलने से कुछ ना थम रहा ना चल रहा, राइट? इन्फ्लुएंसर्स कौन है? आई मीन हमारे कंट्री में ना, हमारे देश में, हमारे कल्चर में इन्फ्लुएंसर्स हमारे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यू नो, वी हैव क्रिकेटर्स, वी हैव पीपल लाइक रतन टाटा जी, अजीम प्रेम जी, ऐसे लोग, सुधा मूर्ति, ये लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो इंटरनेट पे जो है, इंटरनेट पे जो है ये तो कंटेंट क्रिएटर थे बेचारे, मतलब नाच रहे हैं, राइट? सो ठीक है, ये दे आर डूइंग द जॉब, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, इनको इन्फ्लुएंसर नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। Then nobody is influencing anything, nothing is content happening. creators. Yeah. So they are all having fun. People who are watching are having fun. कुछ कहीं सही हो जा रहा है, great. But मतलब हम टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं, वो हमारी गलती है, you know? आप किसी को सुपरस्टार बनाते हो और फिर बाद में बोलते हो अरे सुपरस्टार, उसके बाद बोलते हो अरे एरोगेंट हो गया। अरे तू बनाया तुम्ही ने ना, उसको चढ़ा दिया ऊपर, तो अब तो वो चढ़ गया टॉप पे, तो है ना, अब बोलेगा मैं नहीं उतर रहा अब, राइट? तो गलती हमारी है। तो कंटेंट क्रिएशन के रास्ते में हाउ टू बी सक्सेसफुल, एज इन व्हाट आर द Consistency. 5 There is no 5. no 5 1 Every day show up every day, do right things. There are enough information for free on YouTube which you can Google and learn. YouTube करके आप सीखो, आप जस्ट गूगल पे डालो हाउ टू, और उसके आगे जो भी वर्ड डालो सब मिल जाएगा आपको। हजारों लोगों ने इतने फ्री वीडियो डाले हैं, देखो, सीखो, डालो। बट जरूरी है कि आजकल वो देखा देखी होती है ना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के, वो बना है तो मेरे भी होना चाहिए, उसके इतने फॉलोअर है तो मेरे भी होने चाहिए, वो करना चाहिए कि नहीं? व्हाट I cannot relate with any of this, so I am not the right person to answer. So not everyone can be a content creator. नहीं, not really, no. Some have to be consumers also. Yeah. मतलब नहीं, सबके पास की बात नहीं है। Me myself, I cannot be a content creator. I have coached so many, I have been in journey of so many. बट आप मुझे कहो कि यार मनीष तुम क्यों नहीं कर देते, तुम्हें तो इतनी सारी चीजें आती है, तुमने ही सबको बनाया है, तुम्हारा ही सब नाम ले रहे हो, तो तुम्हारा क्यों नहीं है? मैं आलसी हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा। सिंपल कहानी है, इट इज वेरी टफ। लाइक रणवीर जो करता है, या राज जो करता है, या भुवन जो करते हैं, या अंकुर जो करते हैं, या एनीबडी फॉर दैट मैटर, राइट? लाइक सो मेनी पीपल नाउ, ये कैसे करते हैं उनको ही पता भाई। इट इज वेरी टफ। So Content creation is not easy. how do you define a content creator? Who, like if you see a person and वो कहता है मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, उसमें आप क्या देखते हो? आप बोलते हो हाँ तुम बन जाओगे? मैं ऐसा कुछ नहीं देखता, मैं बोलता हूँ 100 वीडियो बना के लाओ, 100 वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, फिर आके बात करो मेरे से। ओके। हाँ, जो बोलता है ना मैं बनना चाहता हूँ, तो जाओ बनो ना, कौन रोक रहा है? एंट्री बैरियर तो है ही नहीं, फोन सबके पास है, रिकॉर्ड सब नहीं करने आता है, अकाउंट फ्री में बन रहा है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहाँ भी अपलोड करना फ्री में कर रहे हो, कौन तो बैरियर तो है नहीं, तो करो 200 वीडियो बनाओ, फिर बात करो मेरे से। So, apart from Ankur and Ranveer, whom all have you mentored or helped? I mean, see, I don't want to do name throwing. Okay. I But have the covered- one some interesting examples नहीं, जो आपको लगा था कि है, बिल्कुल किताब चल रहा में सारे नाम हैं, आप देख लो। है। एक आध वैसी अरे बता नहीं दो। नहीं, I don't want to throw names and I'm not that person. No, I'm not asking you to throw Yeah, names. yeah. I'm asking you to share some interesting examples. Okay. So there is That where तुम्हारा आपका वो idea चल गया. there is a very young creator. Her name is Janvi. She does content. She creates. She studies Bhagavad Gita and she puts out shlokas and stuff like that. 100 shlokas, No, one shloka a day. Yeah, one shloka a day. Right? Yes. So she does one. I mean, she calls me her mentor. She's a very there are many वैसे तो मतलब Gen Z creators में बहुत सारे हैं. I was very emotional yesterday. I saw Astha, a girl who creates video. वो कॉस्मो के कवर मैगजीन में आई है, एंड शी इज़ अ फाइनेंस प्रोफेशनल बट शी इज़ बिकम अ लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर। तो मुझे वही याद आया इंसिडेंट्स कि 4 साल पहले शी कॉल्ड मी एंड शी सेड भैया शुड आई कम इन दिस, मेरी HDFC में जॉब है बट आई एम वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, विल इट मेक मी एनफ मनी? एंड आई सेड देख तेरे को अच्छा लगता है और तेरे में कन्विक्शन है और तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे माँ बाप तुझे खिला पिला लेंगे एंड यू डोंट हैव अ you don't have to contribute to house right now by God's fortune. So give it a try for 2 years. Like, otherwise, you are already a qualified CA, CFA, whatever, you will get a job any type. She tried and she's beautiful today. She's doing great. ऐसे बहुत examples है. Like I have hundreds of examples. So when you say 100 वीडियो बनाओ फिर मैं बताऊंगा, फिर आप क्या बताते हो उसमें? 100 कुछ नहीं, I'll tell them कि कोर्स करेक्ट करो भैया, ये सही नहीं चल रहा, वो सही चल रहा है, whatever. But that's a lot of research and analysis. Yeah, that's, I mean, see, the thing is that my friends, and I have all my friends are senior to me, like they're senior by age and by experience, because that is when you get to learn, right? Like so when I'm with them and they say तू दिन भर फोन पे क्यों रहता है, and I feel awkward and I don't know what to say because they're senior age wise also, experience wise also, and I keep my phone down. But technically मैं observe करते रहता हूँ. Even if I'm seeing a reel
इन माई हेड वो ऐसे ब्रेक डाउन होता रहता है कि इसमें ये मैंने क्यों देखा, ये कहाँ पे मैंने स्टॉप किया, इसको भगाया, इसको मैंने नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, इसको देखा पूरा तो क्यों देखा, क्या साइकोलॉजी यूज़ हुई, कैसा म्यूज़िक यूज़ हुआ, कैसा कलर फॉन्ट क्या था। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलते रहता, मुझे वो ऐसे ध्यान दे के नहीं देखना पड़ता, वो कैलकुलेट अपने आप होते रहता है, राइट। सो आई थिंक ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है मेरा भी, राइट। You never tried filmmaking? These are No, all I mean, tricks of filmmaking, writing, editing, checking, analysis, I seeing have the story trajectory, I have few friends at making a star. I have few friends at TVF. They are very kind to me, and they have let me do few things. So I've done some work with TVF. Which one? So you will see me in pictures too. Okay, yeah, nice, yeah. interesting. And then so there is this personal finance company that I consult with. I mean, very very kind co-founders. They put up a show called Sapne versus Everyone, which was on TVF, Yes. and it is today India's most highest rated IMDb show. Okay. I had a tiny part to play in that also. So I sat through all the writing sessions, all the reading sessions, and heard the. You're the course corrector. Not really. I mean, don't give me names. I was a part of that team. And I made this thing happen. And it feels good. So to answer your question, yes, thoda bahut ye bhi kiya hai. What next? Nothing. I tell people that personally I'm a person with no goals. I wake up every day and I'll figure out what is to be done, and I do what comes in my head. So yeah, I mean, one goal is goal to nahi, but my job hai mera. I want to scale Be a Biceps as much as we can. I want to be a brother to Ranveer. I want to be in all thick and thin with him. Hindi segment you introduced, you told him how the Hindi segment. Yeah. I did. वो ऐसे ही over a chai we were discussing, and I said, bro, try Hindi. बस इतना ही किया था मैंने. And he said, are you sure? मैंने बोला करना. And then he did. And all मेहनत तो सारा उसने किया. आपका जो बोला है वो सत्य वचन है. तो बोला करना भाई होगा, तो किया और देखो चल गया. गया. आपको गुरुजी बुलाते हैं क्या सारे? हाँ, मतलब एम्बैरेसिंग है, मतलब बहुत लोग गुरुजी बोलते हैं ये, बट एम्बैरेसिंग बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, And which other language are you going to learn? Because you know 12 languages. Yeah. Kannada, Bengali, Punjabi, Nepali, Marathi, different dialects of Chhattisgarh, Balia. So the Jas Talking we did a lot of languages, and I remember that in initial days when it was tough to find content curator and all, and I used to be hearing bored for most of them. I used to hear it scripts in Gujarati, Marathi and all of that, but Bangla, and I used to say हाँ ये सही से story है, इसको करते हैं वगैरह वगैरह. जो कितना important है language content creation में, क्योंकि हम कई बार बड़े myopic हो जाते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ही है. लैंग्वेज कितना उसको कलरफुल कर देता है. Is it an impediment? Is it a roadblock? Or language doesn't matter? It is not a roadblock. It is a boon in our country. हमारा देश इतना बड़ा है ना कि हर 50 किलोमीटर में एक देश है, राइट? लाइक इट्स लाइक दैट. कल्चर, बोली सब चेंज हो जाता है. तो और हमारा स्ट्रेंथ है पॉपुलेशन, राइट? सो आप किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग, एंड यदि आपसे वो कनेक्ट करेंगे तो आपको पैसे भी देंगे, right? So this is very interesting because आपने शुरू में बात करी थी unlocking potential of the youth. So this morning I had a chat with Madan Padaki. He's running the Head Held High organization and One Bright, and they are reaching out to the rural youth, and they are stirring rural entrepreneurship. कि उधर बहुत talent है, and we are trying to unlock that potential. So you tell me, how do you unlock the potential in youth? How do you tell them कि there's a difference between inspiration and aspiration? How do you make them aspirational? I believe, and Shubhit, our co-founder at Jas Talks, explained this very, very beautifully. I think he coined this term also, unlocking human potential. He is the one who coined this term. बहुत सिंपल है. मतलब आप ना कोई पर्सन यदि मान लो कि रिक्शा चला रहा है, राइट? और मान लो कि उनके बच्चे हैं, तो उनको यदि आप कहोगे कि आपके बच्चे क्या बनेंगे, तो बहुत कम लोग कुछ बोल भी पाते हैं, बिकॉज वो ना ये देखते हैं कि यार मैं क्या ही बनवा लूँगा अपने बच्चों को, राइट? आ जाते हैं. हाँ, बट तो फिर आप यदि ऐसे किसी को ढूंढ लो जिसके पापा रिक्शा चलाते थे और वो लड़का कुछ कर गया, जैसे मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड थे, है ना, कि एक दरवान का बेटा कुछ बन गया, तो मेरी कहानी यदि बाहर निकले तो बहुत सारे दरवान के बेटा सोचेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और या दरवान ने देख लिया तो बोलेगा यार अपने बेटे को भेजेगा, बोले यार देख कि ये लड़का ऐसे मेहनत करके किया, तो उसका उनका वो सोचने का तरीका बदलता है थोड़ा सा. एंड आई थिंक दैट इज एनफ, राइट? कहानी बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एटलीस्ट हमारे देश में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यही जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं ना,
1800s में early 1900s में US ने किया है, right? Which is storytelling, which is talking about inspirational stories and talking about how people are changing America every day, right? So there are good things we should learn from these Western countries. Yeah. So which Josh Talk story really resonated with you? A lot of them. I mean, there is this story of IS officer. I'm forgetting her name. Shit. It's a very beautiful story. She hails from Gujarat. And how she broke. I mean, how she broke the pattern and became an IS officer. Then I really like Dr. Ritesh Malik's Josh Talk. I mean, he was a doctor and didn't pursue that. मेरी अपनी जोश टॉक मुझे अच्छी लगती है. I've done one. Right, there are thousands. यार आप ऐसे स्पॉट पे पूछ रहे हो ना, थोड़ा सा ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग भी है कि मेरे को पता ही नहीं है कि कौन सी जोश टॉक. बट आई मीन आज ये 5 साल पहले पूछते ना, मैं फटाफट बोलता. पता है क्यों? क्योंकि थोड़े से थे. बहुत क्लाइंट्स हो गए, बहुत कंसल्टेंसीज बढ़ गई. बट I think Jiveshu Ahluwalia, yes, the stand-up comedian, yes. His Josh Talk is very inspiring. And I remember it clearly. Salman Khan of the stand-up comedy. Whatever you call him, he's a handsome guy. Yeah, I'm very talented. उन्होंने कहा था कि most people die at 25, they only get buried at 75. Yes. Very powerful line. I still remember. Imagine वो Josh Talk का उनका line है. I still remember. और ये कुछ 7 साल पहले shoot हुआ था, right? So his talk is one of the most inspirational. Ankur's talk is very inspirational of how Ankur went to US. Heard him today also. Yeah, came back. His Josh talk is very inspirational. हजारों हैं. मतलब अब ना मुझे शकल याद आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा. फिर बहुत कहानियां. एक IPS ऑफिसर हैं यूपी से, नवनीत सिकेरा. ओ माय गॉड, गूज बम्स आ जाएंगे आपको उनके Josh talks को सुन के. बहुत ऐसी कहानियां हैं. We have a Josh talk from Kailash Satyarthi sir. That is very inspiring. Like thousands. What else occupies your time? What do you like to do the most? When you have free time? I generally do not have free time, but when I have, I really like sitting alone. Connect your thoughts. Yeah. I यदि ना आप मुझे कहो कि आपको इस कमरे में रहना है और आप 1 साल आपसे कोई नहीं मिलेगा, I'll be happy. मैं बोलूँगा ठीक है, no problem. मतलब मैं बोर ही नहीं होता. I enjoy my company. That's why you have that same thing. Yeah. So मैं जो होगा सो होगा. You are मैं आप मेरे को बोलोगे ना लेटे रहना, मैं लेटे रहूँगा. Are you a strong believer? Because the way you are consulting people, there has to be some conviction and belief. मतलब देखो मेरे को How are you transferring that in them? मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरा ना है नहीं कुछ, ठीक है. I have got it from somewhere and I don't know where. And if it is not mine, why should I keep it? So I give. That's that. On that note, we take leave from Manish ji. It was a lovely interaction and there were a lot of takeaways. Yeah, देखो आप भी जी पे आई गए ना. This is my problem. धीरे वो मनीष से ना मनीष जी पे आए जाते हैं. मनीष. और इधर हमारी गुरु जी के साथ बात खत्म होती है, which I'm going to take into account and not be lazy and be consistent. Yeah. I mean, I saw your channel. You are doing great interviews. आप please hire a video editor. and hire a video editor. और आप ये जो लंबा निकला है ना, इसमें से आप काट के शॉर्ट्स भी बनाओ और शॉर्ट्स अपलोड करो. Yes. मतलब आप हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो तो 5 दिन शॉर्ट्स जाने चाहिए उसी वीडियो के, जिसको आप रीलिंग कर सकते हो. और यदि आप कंसिस्टेंटली 1 साल कर लो, I mean independent journalism is. Then I might be one of the speakers. 100%. Why not? I mean like ज्ञान बांटेंगे. नहीं और करो. यदि करो और हक से ज्ञान बांटो ना. मतलब पहले करो, प्रूव करो और हक से ज्ञान बांटो. पता है जो बहुत जरूरी होता है ना, आदमियों में तो थोड़ा ज्यादा होता है because they are born entitled, और तो थोड़ा कम होता है self esteem and confidence. I mean I don't disagree. But वो हमें लगता है उफ अब घर कौन देखेगा, I कैसे आएगा. I have 1000% respect for that. And you know, I'm sorry to cut you, but at 40 when you start a second career, you've done one career, and you see 20 something. You know what? You are at luck today. Whatever you're saying, I have something for it. Okay. This is what I wrote in the morning. Read it up. Youth has nothing to do with age. Weak has nothing to do with age. Enthusiasm has nothing to do with age. Starting up has nothing to do with age. Physical age and ability to do is a mindset. Yes, so I am trying to break that mindset because I see boomers around 20 साल के जिनकी. Yeah, आप interview ना, go to my Twitter, take a screenshot and put it. Yes, I will put it. Okay, Manish, on that note, thank you so much. To you. Nice, thank you for your time. I really had a good time talking to you. Thank you. All the best. And more will come from Just Talking.
Yeah, and Please like, subscribe share, and like, share, subscribe. Yes, thank you. Thank you. All right.